Hello students, welcome to math class. We are going to do our chapter 6 triangles. Students, yesterday we were talking about similar figures. Now the question is this: when two triangles are said to be similar? Two triangles are similar if their angles are equal, meaning दोनों ही triangles के angles equal हों and their corresponding sides are in same ratio और उनकी जो sides का ratio है वो same हो, meaning first side और उधर से दूसरी ट्रायंगल की फर्स्ट साइड में जो रेशो है वही रेशो उनकी रिमेनिंग साइड्स में हो, देन वी कैन से दैट गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट थ्योरम ऑफ आवर चैप्टर. दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम or basic proportionality theorem, and short form of this is BPT. Now what does this theorem says? It says if a line is drawn parallel to one side of a triangle, here I am also going to draw the figure along with. This is triangle ABC. According to this, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, now I am drawing DE. DE को मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया. अब क्या हो गया? टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स. अब DE को BC के पैरेलल तो ड्रॉ किया है एंड रिमेनिंग टू साइड्स आर AB एंड AC. अब AB एंड AC को ये डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी एंड दोज टू पॉइंट्स आर D एंड E. अब क्या है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड. अब इस लाइन ने आपकी जो टू साइड्स थी उनको क्या किया? डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में. तो वो बोल रहे हैं अब यहाँ पर पॉइंट D साइड AB को जिस रेशो में डिवाइड करता है, पॉइंट E भी साइड AC को उसी रेशो में डिवाइड करेगा. मीनिंग वी हैव टू प्रूव दैट AD by DB is equal to AE by EC. So what we have to do? First of all we have to draw the figure to prove a theorem, and figure को हमने draw कर दिया. Now the first point is we have to write given, meaning what is given here? In triangle ABC DE parallel to BC, ये है आपको given है. Intersecting which DE intersects AB and AC at D and E. To prove means क्या करके दिखाना है? You have to prove AD by DB is equal to AE by EC. मीनिंग ए की साइड से फर्स्ट अपर पार्ट को ए की तरफ से लिखा है तो सेकेंड साइड पर भी अपर पार्ट को ए की ही साइड से आपने लिखना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर द थ्योरम इज कंस्ट्रक्शन. अब किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए अगर किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो वो कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, और अगर किसी थ्योरम के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है देन यू कैन स्किप द पॉइंट कंस्ट्रक्शन. बट हेयर to prove this theorem we need construction. So what we have to do here? We will join B to E, C to D, and one more thing, draw DM perpendicular to AC and EN परपेंडिकुलर टू AB. अब ये फिगर में इस टाइप से ये परपेंडिकुलर्स हमें ड्रॉ करने हैं. Now these two are perpendiculars and we have to join
B to E and C to D. Now we will start our proof. Look at the figure. From the figure we can write the area of triangle ADE. Area of triangle ADE. You all know the area of a triangle is 1 by 2 into base into height. So I can write area of triangle ADE is equal to 1 by 2 multiplied by AD. Here I am taking AD and अब AD base पर जो perpendicular है वो है EN. You can write it as now also एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ADE के साथ ही आपको ट्राइंगल BDE के एरिया को लिखना है. नाउ फ्रॉम द फिगर 1 by 2 एंड BDE के लिए जो बेस है दैट इज BD एंड BD बेस को एक्सटेंड कर कर जो हाइट है दैट इज अगेन EN. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ triangle BDE will be, we can divide these two areas 1 by 2 into AD into EN and 1 by 2 into BD into EN. Now we can cancel these and we get AD is equal by BD. So save this result. Similarly, again we can write area of triangle ADE because there are two perpendiculars in triangle ADE on two of its bases. AD बेस पर भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है एंड AE बेस पर भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है. सो वी कैन राइट इट्स एरिया अगेन एज 1 by 2. नाउ आई एम टेकिंग बेस AE एंड what is the perpendicular corresponding to base AE, that is DM. ADE के साथ ही आपको अब ट्राइंगल लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE. It will be 1 by 2 and base of CDE triangle you have to use CE because जिस बेस पर परपेंडिकुलर गिवन है उसी बेस को आप यूज करेंगे. CE and perpendicular is DM. Now we can divide these two. Area of triangle ADE by area of triangle CDE will be 1 by 2 into AE into DM by 1 by 2 into CE into DM. Cancel and you get AE is equal to CE. Now save this result and write it as number 2. Now come to the third point. Also DE is parallel to BC. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. Why? Because both the triangles are on same base and between two parallels. What is the reason here? Lying on same base DE and between same parallels. This property was in class 9th. मीनिंग अगर टू ट्राइंगल्स सेम पैरेलल्स के बीच में बने हों और सेम बेस पर बने हों देन देयर एरियाज आर इक्वल. तो यहाँ से हमें ट्राइंगल BDE एंड CDE का एरिया इक्वल मिल गया. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, now look at your equation 1 and 2. On left hand side in both of the equations in numerator there is ADE और BDE और CDE को हमने इक्वल प्रूव कर लिया है. तो इट मीन्स ये टोटल फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा इक्वल. तो देयरफॉर एंड राइट हैंड साइड ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज AD बाय BD जो है वो आपको किसके इक्वल मिल गया AE बाय CE के.
or we can write AD by DB is equal to AE by EC. और यही हमें प्रूव करना था एंड एट द लास्ट यू हैव टू राइट हेंस प्रूव्ड. Students, next theorem is converse of BPT, and in this theorem what is given? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Meaning BPT में हमने रेशो को इक्वल प्रूव किया था. Now ratio is given to you, that ratio is equal and we have to prove that that line is parallel to the third side. So first of all we have to draw the figure. According to theorem, DE is a line which is intersecting AB and AC such that AD by DB is equal to AE by AC, and on the basis of this ratio we have to prove that DE is parallel to BC. Meaning DE हमें BC के पैरेलल गिवन नहीं है, इसको हमें प्रूव करना है. और जो थ्योरम BPT थी उसमें DE was parallel to BC एंड आपने रेशो को इक्वल प्रूव किया था. So what we have to write in given? In triangle ABC, DE intersects side AB and AC such that AD by DB is equal to AE by EC. To prove DE is parallel to BC, ये हमें प्रूव करना है. So what will be there in construction? Let us assume in figure line DE dash parallel to BC, और let us draw, you can say हमने इसको क्या किया है, ड्रॉ लाइन DE parallel to BC. Now proof, as DE dash is parallel to, sorry E नहीं, E dash is parallel to BC because DE dash is parallel to BC. This is by construction in triangle ABC. So by BPT से हमने किया था, if a line is drawn parallel to a side of triangle, then it divides the remaining two sides in the same ratio. So it means we get AD by DB is equal to AE dash by E dash C, but AD by DB is equal to AE by EC. This is given from 1 and 2. From 1 and 2 we get both the parts are equal to same ratio AD by DB. So we can say that AE dash by E dash C is equal to AE by EC. Now we have what we have to do in next step. Now adding 1 to both sides. We get AE dash by E dash C plus 1 is equal to AE by EC plus 1. Now E dash C is the LCM and AE dash plus E dash C is equal to EC is LCM, AE plus
EC. So from the figure we observe that AE dash plus E dash C is equal to AC, and we get AC by E dash C. Similarly, AE by EC is also equal to AC by EC. So we get that AC by E dash C is equal to AC by EC. This gives us that so E dash C is equal to EC, and this is possible when E dash coincide with E. तो ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट E डैश एंड E जो है वो कॉन्साइड करें. देयरफॉर हैंस DE इज पैरेलल टू BC. हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि D डैश E डैश इज पैरेलल टू BC, बट प्रूफ में ये प्रूव हो गया कि E एंड E डैश कॉन्साइड ईच अदर. सो वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC. So we get DE parallel to BC. Hence proved. Now listen one more thing, students. We have studied that if in a triangle a line is drawn parallel to any of its side, then it divides other two sides in same ratio by BPT. So by BPT we get AD by DB is equal to AE by EC. We have got this result from BPT, and you have to also remember some more results before doing your questions. Say here the ratio is of two parts. AD and BD are both are the parts of the sides, and here on this side also AE and EC both are the parts. It can be as AD by AB, मीनिंग एक पार्ट को कंप्लीट लेंथ से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके साथ भी रेशो ले सकते हैं. इसी टाइप से ऑन अदर साइड AD के सामने जो पार्ट है दैट इज AE, तो इसको हम AE बाय AC भी लिख सकते हैं. और अनदर पार्ट इज BD बाय AB एंड EC बाय AC. These results will also be used in our problems, so you have to understand these one also. मीनिंग रेशो दो पार्ट्स का भी हो सकता है, ऑन बोथ साइड्स पार्ट्स हैं तो बोथ साइड्स पर पार्ट ही होने चाहिए. एंड अगर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक पार्ट एंड फुल कंप्लीट लेंथ है, सो ऑन राइट हैंड साइड देयर मस्ट बी अ पार्ट एंड कंप्लीट लेंथ. सिमिलरली here there is second part by complete length, so on right hand side there must be second part and complete length. Here we are going to start question number 1 of exercise 6.2. There are figures and it is given that in figure 1 DE parallel to BC. ये DE आपको BC के पैरेलल गिवन है, and we have to find length EC in this figure. So again students, we have to use the same theorem which we have studied, that is BPT theorem. In triangle ABC, DE parallel to BC, this is given to you. So by BPT means by basic proportionality theorem, we have AD by DB is equal to AE by EC, or you can say 1.5 by 3 centimeter 1 by, and EC is not known. Now you can cross multiply these and to solve the value of EC. So therefore EC is equal to 1 by 0.5, or you can say
EC is equal to 10 by 5 and it will be 2. So therefore EC is equal to 2 centimeter. Similarly, you will try second part of this question yourself. This one was first question, first part. Now question number 2. E and F are the points on side PQ and PR respectively of a triangle. Now you have to draw the figure yourself. E and F are the points on the sides PQ and PR. Now draw a triangle PQR. Take a point E on PQ and F on R such that F here. And now join these 2 points. And PE is 3.9 centimeter and EQ is 3 centimeter. PF is 3.6 centimeter and FR is 2.4 centimeter. And we have to check on the given basis of given lengths whether EF is parallel to QR or not. देखो अगर ये EF QR के parallel हो then E and F divide PQ and PR in the same ratio. It means we will find the ratio of the parts of the sides. If ratios are same, then by converse of BPT, EF will be parallel to QR. So what we have to do? Here we will calculate PE by EQ. This is 3.9 by 3 and it will be 1.3 centimeter. Now find PF by FR. It will be 1.5 centimeter. This side is 1.3 and this one side is 1.5. Here PE by EQ is not equal to PF by FR. So therefore EF is not parallel to QR. कैसे? By converse of BPT theorem.